This conference will now be recorded. Okay, no problem. So basically, we are responsible to understand about the concept of storage, especially the storage services which is available on Azure portal. अगर हम बेस से बात करें storage की, तो you should know about the concept of SAN storage and NAS storage, right? So we have a two different way to establish our network, establish our storage services with the help of SAN. We are able to distribute the storage to multiple computers. SAN, NAS can also perform the same task, but we should know about the gap between both. तो एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे SAN की बात कर लेते हैं पहले. SAN is basically used to manage the storage services for within the organization, right? You need to establish one high configuration storage. For example, this is our storage device, and that contain a high configuration, like 100 TB of storage, and we have a n number of clients. It may be a client or server machines which is available in organization, and we are able to distribute the space to our clients, like some space to server 1 and some space to server 2, like this. We are able to distribute 100 TB में से हमने as per the requirement, server 1 requested for 1 TB, server 2 requested for 500 gig, like this, and server 3 requested for 2 TB. So we are able to distribute the space in format of block size, right? So the meaning of block size, we are able to distribute our space in format of disk. हर एक सिस्टम के लिए डिस्क के फॉर्मेट में हम अपने स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. Think about the NAS. NAS is a basically network attached storage. NAS, for example, we establish our organization in multiple locations, like we have a multiple branches like that. We establish one branch in India, one in US, or another branch which is running in Dubai location. We establish our storage in location of India. For example, we establish 100 TB of space in location of India, and we wanted to distribute the same space to our US branch or Dubai branch. We established some servers in US, some servers in Dubai location, and with the help of network, we are able to distribute the space in different geographical location. So in this case, in case of NAS, it is considered as a object based storage. The meaning of object is correlated to the data. The object means we are able to store the data. Store the data in the sense you are responsible to just upload the data to the NAS, network attached storage. And the meaning of block size, it will provide you 1 TB space. You can use your space as per your requirement. You want to use 1 TB space to install the operating system. You want to use this particular space to store any software, .NET, or any PHP, Java, .NET, or SQL, anything you can use for the any purpose. This is the actual gap, and why it is important, because our Azure storage can also contain service related to, you can say that, SAN and NAS. So that's why it's important to us, means we must need to know about the gap between SAN storage and NAS storage, and according to that we will establish our storage services over Azure portal. Is it clear? Yeah. Let's talk about the another important points which is available in NAS storage and SAN storage. So for better understanding, I'm just going to categorize our Azure storage in various parts. First of all, if you want to establish the storage, you must need to create a Azure storage account. A single Azure storage account contain multiple, you can say that, services, like as we are able to manage the part of containers. We are established file share. These all are the components, you can say that, tables and queues. Container also categorized in various part, like as blob storage, Mhm.
right? And blob is also categorized in multiple parts, like 3 different part. We have a block blob and page blob and append blob. As it is file share, if we talk about the usage of file share, the file share responsible work just like a map network type. Table and queues, as per the name suggests, these two important storage responsible to manage structured data. So this is the actual, you can say that details related to the storage. इस diagram के according हम proceed करेंगे and we'll try to understand about the each and every options which is available in storage services. Any question? Not yet. Fine. So let's talk about the gap between structured storage and non-structured storage. क्योंकि container और file share की अगर हम बात करें तो both are related to the unstructured storage. Container and file share both can perform the task to store the unstructured data. Or table and queues is structured data. So I hope you have idea about the gap between structured and unstructured data. Yeah, structured is row and column, Mm-hmm. and unstructured is, I mean, as you can say, it's the vertical arrangement, and uh, I think that the vertical is the unstructured. That's a file system, like just say a text file we store. That's unstructured, and row and column is structured. Do we have any examples? Yeah, just say in SQL, that's you store any database. I mean, you make a database. Just say it's on a serial number, name, and the address. So it's in a structured one. It's a row and column. And if you save in a Word file or something else, I mean, in the log, that's an unstructured. Is it right? करेक्ट. जो स्ट्रक्चर डेटा की बात करते हैं विच इज टेबल्स, रो, कॉलम्स, जो भी डेटाबेस लाइक सिक्वल हो गया, ओरेकल हो गया, राइट, या फिर अदर कोई डेटाबेस सर्विसेज हो गई जिसके थ्रू आप डेटा स्टोर करते हैं विच इज कंसीडर एज ए स्ट्रक्चर डेटा. एंड इफ वी टॉक अबाउट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जितने भी आप लाइक कहते हैं पीडीएफ की बात करते हैं, डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, राइट, या फिर इफ वी टॉक अबाउट इमेजेस या फिर वीडियोस, ये सभी आपके पार्ट्स जो होते हैं विच इज कंसीडर एज ए अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ये सभी हमारे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में काउंट किए जाते हैं. करेक्ट? Yeah. So let's talk more about the services, means container, blob, and let's talk about the container. But before that, we need to move ourselves to the portal and create a one storage account. क्योंकि storage account create करने पर भी हमें multiple options दिखाई पड़ेंगे, and we are responsible to manage another important part of storage. Right now we are on page of storage, Azure portal. Go to the compute, sorry, storage, because we completed the part of active directory yet. Select storage account, proceed to create, क्योंकि multiple options दिखाई पड़ेंगे, and we are responsible to manage the each and every steps. This is our subscription, and select your container in the sense you can see that resource group Azure AZ-104 is our resource group. Type the storage name. So I wanted to create a storage account with name of training storage 1980. I wanted to create a location of central US, standard and premium. दो option यहाँ पे available है, which is correlated to the speed.
Speed in the sense related to the data transaction speed, because you know that we have a multiple way to store our data. Like we are able to put our data in SSD, we are able to put our data in case of our HDD. दोनों ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है, हम HDD and Processing SSD speed. दोनों में. Processing, data transaction speed, read writing speed, you can say that. And according to that we need to pay the amount. ठीक है, तो स्टैंडर्ड के केस में जनरल पर्पस V2, और अगर हम प्रीमियम की बात करते हैं तो इट विल प्रोवाइड यू लो लेटेंसी. So if you plan to host any website and you wanted to use your storage account to host your website, so उस केस में हम प्रीमियम को प्रोसीड कर सकते हैं. Redundancy, which is categorized in various part, LRS है, GRS है, ZRS है, and GZRS है. So basically, the redundancy is categorized in 4 different parts. So what do you think about the redundancy means related, not only related to the storage, the word of redundancy, why I it is mean, important? just like in a fault tolerance, if something is goes down, so another, I mean, with the backup of another machines can work. Exactly. So it's a correlated to the backup services. You can say that failover, right? So as a Azure administrator, it's our responsibility. We should know about the gap between our different types of redundancy. So as we discussed, which is categorized in various parts, like as a LRS hai, we have a ZRS, again ZRS, and GZRS. Total number of failover आप बोल सकते हैं या redundancy categorized in 4 different parts, and we should know about the gap between these storage. LRS, as per the name suggests, local redundance, right? And GRS is a geographical. ZRS is correlated to the zone, and GZRS, geo and zone both. So basically, the actual meaning between these different failovers, whenever we put our data in our GRS, what happens? We are able to create 3 copy of single data, 1 location. ठीक है, 3 कॉपी क्रिएट होगी बट लोकेशन एक ही रहेगा. ZRS में ZRS में क्या होगा? We are able to create 6 copy of single data and 2 location. इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 लोकेशन आपको मिल जाएगा और 6 अलग कॉपीज हम तैयार कर सकते हैं. Next, about zone. इस केस में we have option to create a 9 copy of data, जिसमें से 3 location, 6 copy read and write RW, और 3 copy read only. नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहाँ पे जियो जोन की, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉपीज जो बनती हैं 12, and we can put it into the 4 different location and 9 copy read and write, और 3 कॉपी जो बनेगी which is related to the RO, read only. This is the actual meaning of our failover. बट ये ऑप्शन दे रहा है आपको 6 कॉपी, 9 कॉपी या 12 कॉपी. बाय डिफॉल्ट आपको 3 ही कॉपी क्रिएट होगा जब आप प्रोसीड करेंगे. इट गिव यू द ऑप्शन टू क्रिएट द मल्टीपल कॉपी ऑफ योर स्टोरेज. आपने जो भी डेटा ऑब्जेक्ट अपलोड करेंगे उसकी कॉपियां क्रिएट कर सकते हैं, या अपनी तरफ से क्रिएट करके नहीं देगा. That depends on the cost. I mean, cost depends on that.
एग्जैक्टली बिकॉज व्हाट हैपन, अगर ये अपनी तरफ से क्रिएट करके देगा एंड यू डोंट वांट टू क्रिएट अ मल्टीपल कॉपी, तो डेफिनेटली वो चार्जेस करेगा. And SLA depends on this. Yeah, how many, I mean, copies on the, how many locations, how many copy. वी हैव ऑप्शन टू डिसाइड द लोकेशन एंड कॉपी बोथ. हम अपनी तरफ से डिसाइड करेंगे कि हमें कितनी कॉपी चाहिए या कितने लोकेशन में हम अपना डेटा रखना चाहते हैं. Okay. इसका भी कुछ SLA उस पर डिपेंड करता है क्या? लाइक जैसे if in one location it's 99.95, it's something like no that. no which is coming to the picture. Yeah, डेफिनेटली जब आप मल्टीपल लोकेशन क्रिएट करेंगे तो उस केस में ये आपका उसके ऊपर डिपेंड ही रहेगा. Okay. मीन्स इनहैंस द फेल ओवर, कितने परसेंट का फेल ओवर मिलेगा, 90%, 95%. तो जब आप फेल ओवर क्रिएट करेंगे ना, तो उस केस में इट विल गाइड यू. Okay. Fine. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसीजर. आगे बढ़ते हैं इसमें. तो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद जीआरएस, क्योंकि हमें क्रिएट करना होगा. वी जस्ट नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन, स्टोरेज एप्लीकेशन को इस्टेब्लिश करना होगा. नेक्स्ट no need to do anything. We wanted to enable the public access because we want to access from outside the network. And we have a data protection. Under the data protection, we are able to find soft deletion. So what is soft deletion? I mean, just like we deleted, but that will be in recycle bin. It's not means we can recover it. It's like something. Correct. It's it protect our data from accidental deletion. इन केस ऑफ अगर हमारा डेटा गलती से भी डिलीट हो जाता है, लाइक जो आपने ब्लॉब डिलीट कर दिया या फिर कंटेनर डिलीट कर दिया या फिर फाइल शेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई, सो यू हैव ऑप्शन टू रिकवर इट फॉर विद इन 7 days. 7 दिन के अंदर आप इस डेटा को रिकवर कर सकते हो, राइट? आफ्टर डिलीटिंग द डेटा, गलती से डिलीट हो गया, जानबूझ के डिलीट कर दिया, तो 7 days अपने पास रहते हैं, जिसके अंदर हम अपने डेटा को फिर से रिवर्ट कर सकते हैं या Just like in a mail server. I mean, mail server we can give it to 1 month or 7 days. अपने ऊपर डिपेंड करता है. इट्स फुल्ली डिपेंड अपॉन अस, क्योंकि एज पर द सॉफ्ट डिलीसिंग वी हैव टू पे द अमाउंट. क्योंकि जो कॉस्ट डेज अगर इंक्रीज कर दें तो कॉस्ट विल बी मोर. एक्चुअली क्या होता है इनका, विच इज कॉम्प्लीमेंट. फॉर एग्जांपल आपने 30 days के लिए मेंशन कर दिया एंड यू वांट टू रिकवर योर डेटा इन नेक्स्ट 30 days, राइट? आपने अपनी तरफ से डेटा को डिलीट कर दिया, बट एज्योर अपने पास इसको 30 days तक स्टोर करके रखेगा, राइट? एग्जैक्टली. एंड यू हैव टू पे द अमाउंट इफ यू रिकवर द डेटा. 30 days के अंदर आपने 25 days कंप्लीट होने के बाद आपको याद आया कि नहीं, आई वांटेड टू रिकवर माय डेटा, तो उस 25 दिन का आपको पे करना पड़ेगा. अगर आप 30 days तक नहीं यूटिलाइज करते तो नो नीड टू पे अमाउंट. गॉट इट. सॉफ्ट डिलीशन, यू कैन से दैट इट वर्क जस्ट लाइक अ कॉम्प्लीमेंट. ये बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है कि अगर आप यूज करेंगे, अगर आप रिस्टोर को प्रोसीड करेंगे, देन यू हैव टू पे द अमाउंट, अदरवाइज नहीं. चलो, I'm just going to proceed with 7 days. I wanted to use
two different way. We have a two different way to protect our data while data transaction. एक तो माइक्रोसॉफ्ट मैनेज की है, दूसरा कस्टमर मैनेज की है. कस्टमर मैनेज के केस में यू नीड टू क्रिएट योर ऑन इनक्रप्शन कीज. माइक्रोसॉफ्ट के केस में बिल्ट इन इनक्रप्शन कीज अवेलेबल है. यू कैन प्रोसीड विद एग्जिस्टिंग. सो आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद कस्टमर की, जस्ट नीड टू रिव्यू and create. Now storage is ready to use. Just need to go to the resource. Training storage 1980, and we are able to find all the types of storage. Containers भी है, file share भी है, queues भी है, and table भी है. ये सभी options हमें एक single storage account में मिल रहे हैं. And we need to learn a lot related to the storage. So let's talk about the container, file share. Internally जानने की कोशिश करते हैं कि containers में क्या-क्या options रहते हैं. So to understand about the storage container services, let me explain you about the actual use of containers. And because the blob is also a part of containers, so let's try to understand about the concept. एक word about the Kubernetes. That's for the storage or? Kubernetes is an automation tool that can help us to manage the deployment related to the application or website. Mhm. So Kubernetes is a type of container, you can say that. Yeah. But not related to the storage. Okay. Kubernetes and containers both are different to each other. Okay. It's a container for the applications and Application and website. Azure Container Storage. So let's try to understand about the concept of container. We have a public storage, right? Public storage, and try to understand about Azure container, the gap between public storage and cloud container, especially in Azure. We have a Google Drive, OneDrive, iCloud. And इसको compare करते हैं अपने container से, जो कि है blob. Under the container we are able to create a blob. Let's talk about Google Drive. So what do you think about the Google Drive? It will provide you 15 gig free space, I think. Mhm. As it is, OneDrive भी लगभग 25 gig के आसपास free space provide करता है. Yes. 5 GB के आसपास space हमें iCloud में मिल जाता है. But if you want to purchase more than 5 GB, 15 gig, like अगर हमें 100 gig का space purchase करना है, तो how much you need to pay? For 35, it's a $3 something they're charging. $365. So $130 for 100. per month. Oh, that's. ठीक है? Yeah. 130 per month, and
फॉर पर 100 गिग 100 गिग का स्पेस जो हमें देना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 130 रुपीज. Okay, that's a difference. I mean, there is some difference. What I'm paying is more than that. That's No, for storage, yeah. Google for Drive. Google storage. Yeah, I'm paying more than that. I don't know. The company will be charged or Okay, maybe according to the location change, जो yeah. costing change हो सकती है definitely. Now, and think about it, 100 gig space, 130 rupees, but it works just like a subscription, right? It works just like a subscription. वो कैसे वेरीफाई होगा कि आपने 100 gig का सब्सक्रिप्शन परचेज किया, बट जो एक्चुअल डेटा आपने अपलोड किया, फॉर एग्जांपल द डेटा कैपेसिटी इज जस्ट 20 gig, राइट? आपने जो डेटा अपलोड कर रखा है विच इज 20 gig, you have to pay the 130 rupees for 20 gig as well. आपने इतना स्पेस परचेज किया, इतने के लिए आपने सब्सक्रिप्शन परचेज किया, बट यू आर रिस्पॉन्सिबल टू पे. आपने जो एक्चुअल डेटा रख रखा है वो है 20 गिग का स्पेस. आपका जो डेटा कैपेसिटी है वो 20 गिग, फिर भी हमें जो पेमेंट देनी पड़ेगी 130 पर मंथ ही देनी पड़ेगी. इज इट करेक्ट? Mhm. Because in case of cloud or any public storage, you need to pay the amount as per the space that you are purchasing. आप जितना स्पेस परचेज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका पेमेंट जाएगा, ना कि जितना डेटा अपलोड करेंगे. इन केस ऑफ पब्लिक, इन तीनों में से किसी पे भी जाएंगे आप, अगर आप आई क्लाउड में भी परचेज करते हैं स्पेस, तो आपको उस पर्टिकुलर स्पेस के ऊपर पेमेंट देना पड़ेगा, आपका एक्चुअल डेटा क्या है उसके बिहेव पे नहीं. चलिए आगे इसी में बढ़ते हैं. अगर हम बात करें अपने Azure Blob के केस में, तो Azure Blob के केस में क्या होता है कि you have to pay the amount as per the data capacity. ठीक है, आपको जो पेमेंट देनी पड़ेगी वो डेटा की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट मंथ आपने 200 गिग का डेटा अपलोड किया एंड आफ्टर दैट 100 गिग का स्पेस आपने डिलीट कर दिया, तो जो पेमेंट है वो आपको नेक्स्ट मंथ, ये फर्स्ट मंथ हो गया, सेकेंड मंथ आपने जो है 100 गिग का डेटा डिलीट कर दिया, तो जो पेमेंट जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ 100 गिग का स्पेस का आपको पेमेंट करना पड़ेगा. This is the actual difference between our public cloud and Azure. difference between public cloud and our Azure storage. Second important part, Azure storage में हम एक और important service पढ़ेंगे, which is really important, consider as a access tier. With the help of access tier, you can manage your storage as per your requirement. Is it okay about these two different types of storage? Yeah, perfect. ठीक है, so let me create a one container. Click container and type the name of your blob, basically container. So I wanted to put a name storage. We have another important point like as a public access label. It's fully depend upon you. Private, blob and container. The data access permission categorized in 3 different part. Up only for the, you can put it as a private. The meaning of private, no one can access your data. ना कंटेनर एक्सेस हो पाएगा, ना ही उसके अंदर जो डेटा है उसको कोई एक्सेस कर पाएगा. You wanted to share blob only, means read access for blob only.
मीन्स आपने कोई पर्टिकुलर डेटा अपलोड कर रखा है अपने कंटेनर के अंदर, लाइक 10 फाइलें हैं, उसमें से केवल एक फाइल का एक्सेस देना चाहते हैं, केवल फाइल्स का एक्सेस देना चाहते हैं, नॉट इंटायर डेटा, तो वी कैन प्रोसीड विद ब्लॉब. And if you want to if you want to provide the access of your data which is available in container, जितने भी डेटा है सबका एक्सेस देना है, तो we can proceed with container. Anonymous read access for the container and blob both. जो कंटेनर है उसका भी एक्सेस और जो उसके अंदर फाइल्स है उसका भी एक्सेस देना है, तो you just need to proceed this. Create पे क्लिक किया, we successfully created a one container with name of data. Select container and upload some data. Click upload. And select the data from on premises. So let me select any data, कोई सा भी data एक select कर लेते हैं. And upload. It may be structured or unstructured, or it may be anything. Unstructured data. Okay. Container and file share both responsible to store only and only unstructured data. Okay, it's that. अगर that structured means, चाहिए, mm-hmm. अगर structured चाहिए, तो we need to proceed with another. Okay, file and not file. Sorry, the table and the other two options. Table and queues, yes. We successfully uploaded the data, and if you want to share it, just need to copy the URL और किसी भी ब्राउजर पे जाकर हम इसको पेस्ट कर सकते हैं. Anyone can access the data from anywhere. It works just like a Google Drive, but कहीं ना कहीं it gives us lots of options related to the security, lots of options related to the data management in terms of pricing. कई सारे ऑप्शन देता है हमें to manage the storage services. There is a term access tier. That's a host. Access tier, yes. So But let's talk about the usage of access tier. Mm-hmm. Access tier क्या होता है? The benefit of access tier, for example, Azure storage access tier. For example, this is our storage account, and we wanted to the storage hot access tier categorized in 3 different parts: hot tier, cool tier, and archive. Oh, fine. I got it. That means if we use rarely, then we'll go for archive, and once in a year we'll use, then we'll go for cool, and frequently use, that's a host. Exactly. This is our local computer. We wanted to store our data. For example, एक टीवी का example लेते हैं. If you want to upload a data 1 TB to hot tier, so what are the pricing? You need to pay $20 per month, and downloading इसमें free रहेगा. Downloading का कोई charges नहीं पड़ेगा. Totally free, but you have to pay the $20 per month. 1 TB का space. If you want to upload same space,
same storage to cool tier. इसमें 1 TB का आपको पड़ेगा $10 फॉर मंथ एज ए चार्ज, और इतना ही अमाउंट आपको डाउनलोडिंग का देना पड़ेगा Okay. इफ यू डाउनलोड द डेटा. टॉक अबाउट आर्काइव. सो आर्काइव के केस में जो कॉस्टिंग है which is related to only $2 per month चार्ज रहेगा, बट इसका जो डाउनलोडिंग कॉस्ट है ना वो है $22 पर डाउनलोड. Per This is download the means actual. one file or 1 TB? No, entire data. Entire data. Okay. ये पूरा 1 TB के काउंटिंग है. मीन्स ये जो $10 दे रहे हैं या फिर ये जो $22 हम पे करेंगे, ये पूरे 1 TB का स्पेस है. Okay. Alright. But archive is it depends. Anytime we can make it hot, cool, or archive. If you're responsible to manage large amount of data, so make sure we should put according to the requirement. Because you know that बहुत सारी companies रहती हैं जो लगभग every month 10 TB 20 TB 50 TB 100 TB का डेटा उनकी कंपनी से ऑर्गेनाइजेशन से निकलता है. सो मेक श्योर कि आपका जो डेटा है वो कितना ज्यादा यूज में आएगा. यूज इन द सेंस कि यूज रिलेटेड टू द कि उसको रीयूज कितना किया जाएगा, क्लाइंट्स जो है हमारे डाउनलोड कितना करेंगे, या क्लाइंट्स हमारे जो है उसको स्ट्रीम कितना करेंगे, लाइव कितना देखेंगे, उसके भी है पे आप डिसाइड करेंगे हॉट कूल एंड आर्काइव. करेक्ट. For example, you establish a website, right? आपने website establish कर रखा है because you know that n number of websites are available in market. Like Udemy की बात कर लें, right? YouTube की बात कर लें, Udemy की बात कर लें, एंड ऐसे बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे हम डायरेक्टली स्ट्रीम करके अपने रिकॉर्डिंग सेशंस वगैरह देख लेते हैं या मल्टीपल वीडियोस देख लेते हैं. तो जो YouTube या Udemy वगैरह है ना, ये 24/7 इस पे डाउनलोडिंग चलती रहती है. सो इस केस में ऐसे अगर कुछ प्लान कर रहे हैं हम सेटअप करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो सबसे बेटर है कि उसको हम हॉट में ही रखें, क्योंकि हॉट के केस में एटलीस्ट डाउनलोडिंग का कोई चार्जेस नहीं है. ये $20 आपका फिक्स रहेगा कि हर महीने 100 TB 1 TB का स्पेस आपको लगेगा, एंड 1 TB का स्पेस आपको पे करना पड़ेगा $20 में. इज इट करेक्ट? Yeah. If you want to download your data not in very frequency, तो अगर आपको लगता है कि नहीं हो सकता है 6 महीने या 1 साल के अंदर हमें डेटा डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, या 4 महीने 5 महीने में डेटा डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उसके अकॉर्डिंग फिर कूल बेटर रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कुछ कॉस्टिंग हम बचा रहे हैं. अगर हम 5 महीने तक केवल डेटा को स्टोर करके रखते हैं, डाउनलोड नहीं करते हैं, तो वी जस्ट नीड टू पे अमाउंट ओनली $50. यहीं पे अगर हम सेम डेटा अगर रखते हैं यहाँ पे, तो अप्रोक्सीमेटली जस्ट डबल होता, $100 आपको पे करने पड़ते हैं फॉर 5 months ओनली. करेक्ट. Yeah. नाउ so it's our responsibility, we must need to identify the data. अगर हम क्लाइंट के लिए टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो we must need to ask to client कि ठीक है डेटा तो हम रख देंगे, बट कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी अबाउट द यूसेज ऑफ योर डेटा. जो आप क्लाउड पे ऊपर डेटा अपलोड कर रहे हैं उसका एक्चुअल यूसेज क्या है. अकॉर्डिंग टू द यूसेज आप प्रोसीड कर सकते हैं आगे. आर्काइव, व्हाट यू थिंक अबाउट द आर्काइव? क्या होता है? डू वी हैव एनी एग्जांपल्स रिलेटेड टू द आर्काइव? कौन कौन से डेटा है जो है हमारे आर्काइव में काउंट होते हैं? Archive means what? Just like anytime we can change it as a hot or cool. I mean, there is a data, and we think that gonna be used this month high and the next month low. So we can change according to that one. So that's our archive, right? Or it's something else. नहीं नहीं, एवरीवन डाउनलोड करेंगे तो आई थिंक विच इज नॉट रिलेटेड टू द आर्काइव.
Okay. ओके, सो आर्काइव बेसिकली ऐसा डेटा जो आप डाउनलोड नहीं करना चाहते, Hmm. डाउनलोड नहीं करना चाहते इन द सेंस लाइक एज नॉट फॉर एवरी टाइम। कुछ ऐसे डेटा होते हैं जिसको हम डिलीट भी नहीं कर सकते और स्टोर करने में भी इनकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा जाती है। n number of data categories are available like as you know that CCTV कैमरे की डेटा की बात कर लें, Hmm. राइट, या फिर हम बैंक स्टेटमेंट की बात कर लें, राइट, या फिर हम किसी पुराने डेटा एंट्री की बात कर लें। इनका यूसेज तभी पड़ेगा जब बहुत ही ज्यादा काइंड ऑफ इमरजेंसी होगी, उस केस में हमें ये डेटा देना पड़ेगा, मीन्स डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। Hmm. गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? Yeah, infrequent use. Yeah. इनफ्रीक्वेंटली यूज, अब सीसीटीवी कैमरे की बात कर लें, यू नो दैट एज Hmm. पर द रिक्वायरमेंट, मीन्स जब बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी उसी के केस में आपको पेमेंट करना पड़े और उसी के केस में आपको रिक्वायर डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट होगी या देखने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज नो वन कैन डाउनलोड without reason. Okay. So we must need to discuss with our client, and according to the client's requirement, we need to proceed. Is it Hmm. correct? Yeah. So this is all about the information related to the access tier, or you can change that tier anytime. अभी यहाँ पे hot tier है, Hmm. and we just need to click on three dots, चेंज टीयर पे जा करके आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डेटा आपको रखना है, वी मस्ट नीड टू चेंज इट। यहाँ पे हॉट, कूल, आर्काइव तीनों ऑप्शन अवेलेबल है, सो एज पर द रिक्वायरमेंट यू कैन चेंज इट। Okay. All right. इज इट क्लियर? Yeah. ग्रेट। नाउ again important part related to the storage, we are still on page of our container services। यहाँ पे हम एक और पॉइंट ऐड करना चाहते हैं which is really important for us। अभी हमने स्टोरेज को जो मैनेज करने का प्रोसीजर है, वी कॉन्फ़िगर एंड मैनेज द स्टोरेज विद द हेल्प ऑफ पोर्टल ओनली, राइट। अब जैसे क्लाइंट हमारे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में अवेलेबल है, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल द पोर्टल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पोर्टल को हैंडल करें, राइट। जो भी क्रिएट करना है अकाउंट, उसमें कंटेनर वगैरह बनाना, ब्लॉब वगैरह क्रिएट करना, वो सब आपने स्टैब्लिश कर रखा है। but you are responsible to provide the access of your container to multiple employees। 50 एम्प्लॉय हैं जिनको आपको कंटेनर का एक्सेस देना है ताकि वो अपना डेटा स्टोर कर सके, राइट। तो Hmm. सबको तो अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकते बिकॉज इट्स रियली डिफिकल्ट। सिक्योरिटी के केस में ये आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अलाउ नहीं करेगी कि आप हर एक एम्प्लॉय के लिए अकाउंट क्रिएट करो ताकि वो अपना डेटा अपलोड कर पाए। सो वी हैव अ टू डिफरेंट वे टू मैनेज द स्टोरेज अकाउंट। This is our storage account and we have a two different way to manage it। एक डायरेक्टली आप पोर्टल के थ्रू हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली पोर्टल पे आप लॉग इन करके एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन अपने पास ये है, वी कैन प्रोसीड एंड यूज Azure स्टोरेज एक्सप्लोरर।
ये एक टूल है, आप बोल सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम अपने स्टोरेज अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, लाइक दिस। पोर्टल एक्सेस के लिए यू नीड टू ओपन द पोर्टल, एंड पोर्टल के बाद यू नो दैट यूजर आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ेगी। Azure Storage Explorer is a tool that you need to install on your base machine. Multiple PCs, multiple clients हैं, you just need to ask to entire client कि आप अपने system पे ये tool download कर लो, like this, and download करने के बाद you need to provide the access. We have a multiple way to provide the access, जैसे कि आप उनको keys के through भी access दे सकते हैं, and SAS URL shared access signature keys भी है, उसके थ्रू भी हम access provide कर सकते हैं। तो we have a various way to provide the access. Is it okay? Yeah. So let me explain you about the procedure, how we can do that. This is our Azure portal, और यहाँ पे हम meanwhile एक और system connect कर लेते हैं। This is our client computer, and open any browser and download Azure Storage Explorer. Download Azure Storage Explorer. Download and install on premises. Done. Install on premises, and we have a various way to make a communication between on premises storage, on premises machine to Azure storage account. So not only the storage account, अभी तो इन्होंने बहुत सारे options provide कर दिए हैं to manage the storage services. आप यहाँ पे आप resources add कर सकते हैं. You have option to manage the entire account. इंडिविजुअल रिसोर्स को शेयर करना है, मल्टीपल ऑप्शन ये डे बाय डे अपडेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टूल के अंदर। बट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज स्टोरेज। तो स्टोरेज मैनेज करने के लिए हमें क्या करना होगा, वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन कनेक्ट बटन। ये अपने पास जो कनेक्ट का ऑप्शन है ना, इसके जरिए हम अपना स्टोरेज कनेक्ट कर सकते हैं। सो वी आर एबल टू फाइंड सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे हमें सब्सक्रिप्शन की डिटेल नहीं प्रोवाइड करनी है, बिकॉज यू नो दैट इन केस ऑफ सब्सक्रिप्शन, अगर हम सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड भी करते हैं तो उस केस में हमें यूजर आईडी एंड पासवर्ड दोनों प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एंड एज यू नेवर सजेस्ट यू टू शेयर द क्रेडेंशियल विद एनीवन। जो स्टोरेज अकाउंट का जो अपने एज्यूर पोर्टल का क्रेडेंशियल है वो हम
क्लाइंट को नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो व्हाट वी नीड टू डू, सेलेक्ट स्टोरेज अकाउंट एंड सर्विसेज, सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज अकाउंट शेयर करना चाहते हैं। वी हैव कनेक्शन स्ट्रिंग, SAS शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर बोला जाता है इसको। SAS एक स्ट्रिंग की मिलेगी और दूसरा URL मिलेगा। विद द हेल्प ऑफ URL वी आर एबल टू शेयर, वी आर एबल टू कम्युनिकेट। एंड तीसरा ऑप्शन है अकाउंट नेम एंड एक्सेस की। अकाउंट नेम एंड की बात करें तो जो हमने अकाउंट क्रिएट किया, लाइक इन आवर केस वी क्रिएटेड अकाउंट विद नेम ऑफ ट्रेनिंग स्टोरेज 1980 एंड वी नीड टू फाइंड द एक्सेस की। ये अपने पास कीज है and you can set the keys, you can rotate the keys anytime. It's fully depend upon you, right? So by using use account name and keys, we are able to make a communication. And there is an option key 1, key 2, means the same resources we can pass on to 2 person with key 1 and key 2, or it's for 1 person, key 1 and key 2. For the security purpose, you can share the both key to different employee, different client. Okay. For example, you wanted to share the storage access to two different account. एक को आप केवल 2 दिन के लिए अलाउ करना चाहते हैं, एक को आपको परमानेंट के लिए अलाउ करना है या काफी दिन के लिए अलाउ करना है। तो जो 2 दिन के लिए है उसको आपने क्या किया, शेयर करने के बाद 2 दिन बाद आप इसको रोटेट कर देंगे ताकि की जो है वो आपका डिस्कनेक्ट हो सके। Okay, got it. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरेज। अभी इसमें कुछ और टॉपिक्स हैं, लाइक एज वी नीड टू नो अबाउट द फाइल शेयर, फाइल श्रिंक, दोनों ऑप्शन हमें डिस्कस करना है। एंड विल डिस्कस अबाउट एक्सप्लोरर के थ्रू कैसे मैनेज किया जाता है। एंड वन मोर पॉइंट, replication and life cycle management. So storage will take 2 more session to complete the entire topics. तो एक कल का सेशन रहेगा अपने पास, and then one more session required to understand about the Azure file sync, क्योंकि उसमें hybrid environment तैयार करेंगे on premises से cloud के ऊपर। तो you just need to perform the entire practical. Last जो previous topic हमने discuss किए थे storage में, और अभी जो हमने discuss किए, अभी ये दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे एंड देन विल स्टार्ट न्यू टॉपिक। स्टोरेज के बाद हम मूव करेंगे VM की तरफ। VM कंप्लीट करने के बाद नेटवर्किंग का पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, Okay, fine. Manjeet, do you have 5 minutes more? या प्लीज। Or you need to go? नहीं, 5 मिनट है, बोलो। Okay. I'll give my access. I made the virtual machine and installed the 2016, but I'm ठीक not है, able to install the AD Connect on that one. So can I give my access to you? आई एम मेकिंग यू प्रेजेंटर। आप अपनी स्क्रीन शेयर करो, आई विल गाइड यू। Okay. Uh, Again, I need to go, or नो 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 that's नो, आई जस्ट मेक यू प्रेजेंटर। आप अपनी स्क्रीन शेयर करो। okay? Fine. Okay, that's I made it. ठीक है, the virtual machine is Or created over a Oracle VMware, right? yeah. Oracle virtual box, ठीक है। So that's just a moment. I'll give it. ये मैसेज देता है it's not compatible with this system or with the Windows.
Are you able to access the internet on this machine? एक बार internet speed check करो. Okay, just a moment. Just need to open Internet Explorer और वहाँ पे एक बार check कर लो speed. बहुत ही स्लो हो जाता है ये. Speed test. Just type speed test. माई स्पीड से भी रोजर का वो है, वो निकलाता है. चेक हो जाती है. I have given 4 GB RAM to this one, even though it's so slow. Base machine की capacity क्या है RAM की? I think it's an 8 or 16. Let me check. 16 GB. We have enough space. सिस्टम तो मैं लेटेस्ट लिया था ऑफिस के लिए, तो दैट्स so I think it's not showing that. नहीं, इसमें तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी. Speed that be minimum 10 Mbps, right? Minimum required, yes. उसको मैं चेक कर लेता हूँ. And meanwhile, just check my that's giving the operating system does not support. That's AD Connect. Operating system does not support. Can you please open control panel? Yeah, that's system or devices, which one? कंट्रोल पैनल में जाकर के प्रोग्राम एंड फीचर्स. Programs? Yes. प्रोग्राम एंड फीचर्स अगेन टॉप पे. इसको आप रिमूव करिए. डाउनलोड अगेन. रिमूव. क्लिक रिमूव. नो रिमूव. क्लिक एग्जिट. हाँ एग्जिट कर दो.
The same one or download once again? Download other Azure Ready Connect. माइक्रोसॉफ्ट साइट से ही डाउनलोड करना. ये माइक्रोसॉफ्ट साइट ही है. I think there's a speed problem, I think. हाँ, इंटरनेट स्पीड इस पे बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल है. डाउनलोड ही नहीं हो रहा है. फिर मैं अलग से ही मशीन बना के फिर कल डिस्कस करता हूँ. ठीक है, थैंक यू. Okay, thank you so much. Yeah, welcome. We'll connect tomorrow on same time. Thank you. Okay, fine.